Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and thank you so much for showing so much of love on my first video. I am planning to make many more such videos, so keep supporting me and call the on click function of that subscribe button and hit the bell icon so that you never miss an update. So for today's video, we are going to be doing in-order traversal of a tree but without using recursion. In my last video, I explained how we can get the in-order traversal using recursion. If you haven't checked that video out, I'll link that in my description box below. You should go and see that video as well. So let's just start with our today's video. Before starting, let me just quickly explain to you what's the difference between a recursive approach and iterative approach. First of all, the time complexity. The time complexity of recursion is much more than the time complexity of the iterative approach. As in recursion, we use function calls and we are again and again calling the same function. The time there increases manifold, whereas in a iterative approach we are just running a loop, so that takes much less time. The second point is length of the code. So the length of the code in the case of recursion is very short, whereas it's a bit longer in iterative approach. So it's a trade-off between your length of the code and the time complexity. If you are focused on time of your program, then you should go for the iterative approach. Whereas if you are concerned about the length of your program, then recursion is the way to go. Anyway, it's your choice and the demand of your program, which will tell you what to choose. Another thing is, if you enter into an infinite recursion calls, then your system will crash abruptly because the recursion allocates space in the stack memory, and when the memory will run out of space, then the system will crash. Whereas in infinite loop, it will run forever unless it is interrupted by any external force. Okay, and now let us begin the discussion of the in-order traversal of a tree without using recursion. So when we say in-order traversal, what we are saying is, what we mean is we want we want the left to be printed first, and then the root, and then the right of the tree, right? And when I say left, what we mean is the whole left of any node that we're talking about. So if this is the node that we're talking about right now, then the left is the whole subtree and not only the 15, the immediate left child. I'm not talking about that. I'm talking about the whole subtree. Okay. So this part is the first thing that we want to be printed. Then this, and then we will print this. Now when I say I want to print this, the left subtree, then we are assuming that this is again another tree with the root 15 and the left and right child. Okay, so let's just begin. So now as we think of the solution, the first thing that we want to know is, do we need any data structure, and if we do, then which one it will be. So now here it's very obvious that we will need a data structure, and एज यहाँ पे हमको लेफ्ट प्रिंट करते हुए जाना है, लेफ्ट प्रिंट करना है, लेकिन बाद में, राइट, पहले मुझको 30 तक पहुंचना है एंड उसके बाद मुझको प्रिंट करना स्टार्ट करना है while processing every node which we encountered while coming to 30, right? So I have to remember every node that I passed. So what is the way to do that? So this is a concept of last in first out. As हम जो देखते हुए जा रहे हैं मुझको रखते हुए जाना है, मैंने जो लास्ट देखा है हम उसको सबसे पहले प्रोसेस करेंगे. So मतलब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, and stack is the way, stack is the solution which we want. The data structure we will be using is stack. Okay, so now as we're clear with that, let's just begin writing the code for it. Okay, so let's begin with the code. So void in order, we need to pass the root of the tree, and as we discussed, we want a stack. So I am using this STL that C++ has, which is called stack. Sorry. Okay, and just name it tree. Now we need a pointer through which we will traverse through the tree. So let's just take a pointer and name it temp, and we will initialize it with the value root. Now
till when do we want to run a program? Till we have a node to process, right? Till we have any node which we haven't processed and we need to print it. So we are using the stack to fill our to keep a track of the nodes that we need to process. So while our stack is not empty, we want the whole code to run. So while our stack, the tree is the name of my stack. So while tree is not empty, okay, we want to do this. Now if you see at this point of time when we have just begun, there is nothing in my stack, so this will turn out to be true and we will just the loop will terminate. So if we just keep one condition here, a loop is never going to get into the loop, right? Control will never go into the loop. So we want another condition, and that will be temp is not equal to null. Okay, so this condition will at this point of time will help us to get into the loop and start a program. Now first of all, what do we want? We want to process all our left nodes, right? I mean, we want to keep a track of all the left nodes that we have already encountered, and we will start processing it from the back, like from the top bottom of the tree. So we will just at this point of time, we will keep pushing our left nodes into the stack. So what we want is tree dot push temp, and we will make temp is equal to temp of left. Now whatever node we have seen just now, we want the left of it to be processed next or pushed into the stack. So at this point of time, when we are done with this code, our stack will look something like this. So this is, let us suppose, is a stack. We will put 20 in it, then 15, then 30. Next our temp value will become null, and this part of the loop will terminate, like this loop will terminate, right? So next what we want, as we have done the left part of it, अब we want to process each node that we have already seen. तो at this point of time हमारे टॉप पे हमेशा वही नोड होगा जिसका लेफ्ट नहीं है, एंड हमको अब वो प्रिंट ही करना है. सो एज वी वांट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द टॉप ऑफ अवर stack in our temp, so we will just take that top, we will pop it out of the stack because आगे जाके हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, and we will print it, right? Temp data, we will just print it. ठीक है, इतना हमने कर लिया. अब इसके बाद हम हमारा स्टैक कैसे दिखेगा, इसमें और 30 नहीं होगा, और जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तब वो 30 प्रिंट कर दिया होगा. इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद एज वी हैव नाउ प्रोसेस द लेफ्ट एंड द रूट पार्ट ऑफ इट, वी वांट कि अब हम राइट प्रोसेस करें. तो हम सिंपली टेम्प को टेम्प के राइट पे पॉइंट करा देंगे, बिकॉज अब नेक्स्ट हमको चाहिए कि राइट ही प्रोसेस हो. एंड वी विल एंड दिस लूप एंड वी विल जस्ट एंड द मेन फंक्शन हियर. ओके, सो ये हमारा पूरा कोड है. आई जस्ट ड्राई रन फॉर द लेफ्ट पार्ट ऑफ इट एंड टेल यू हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. तो इतना तो हमने देखा कि 30 तक हमारे स्टैक में आया, फिर हमने 30 को प्रिंट करा. लेट मी राइट इट हियर. हमने 30 प्रिंट कर दिया. उसके बाद temp इज इक्वल टू temp ऑफ राइट, ये वाला लाइन रन होगा, एंड temp का राइट में तो कुछ है नहीं, इट्स नल. सो इट विल द कंट्रोल विल कम फ्रॉम हियर टू हियर. temp खाली है, द temp इज नल, सो दिस विल बी फॉल्स, एंड ये वापस इधर आएगा, एंड temp का टॉप ये वापस से temp में टॉप आ जाएगा, तो मतलब कि वापस 15 होगा temp में. एंड नाउ फिर ये भी पॉप हो जाएगा,
एंड इसका डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि इसके बाद 15 मैं ऐसे ऊपर से नीचे लिख रही हूँ, ओके, सो ये 15 प्रिंट कर देगा, ठीक है। एंड अगेन उसका राइट पे ये जाएगा। सो सी दिस इज व्हाट वी वांट कि हमारा स्टैक में एक एक नोड आए, वो प्रिंट हो और फिर उसका राइट प्रोसेस हो। तो अब इसका राइट प्रोसेस होगा, अब इसका राइट में जब आएंगे तब ये लूप यहाँ से वापस इधर जाएगा एंड टेम्प अभी नल नहीं है, तो मतलब टेम्प में हमको पुश करना है कुछ, तो ट्री डॉट पुश टेम्प, तो मतलब अब टेम्प हमारा राइट को पॉइंट कर रहा है, यानी कि 35 को पॉइंट कर रहा है। तो मतलब अब हमारा स्टैक में 35 आएगा और फिर जब 35 आके फिर टेम्प का लेफ्ट पॉइंट करेगा, टेम्प का लेफ्ट फिर से नल हो जाएगा, तो ये लूप वापस एंड हो जाएगा। This loop will end again and we will again print the top of the tree which is 35 and we will again pop it from the tree एंड हम लोग उसका राइट पे चले जाएंगे। फिर अब उसका राइट तो वापस से नल हो गया है, तो वी विल एंड अप पुशिंग नथिंग इनटू द लूप एंड वी विल प्रिंट 20। अब जब हमने 20 भी प्रिंट कर दिया होगा तब उसके बाद हम वापस टेम्प के राइट पे जाएंगे। 20 तो अब इसमें से पॉप हो चुका है एंड अब हम इसमें 25 पुश कर देंगे। 25 पुश करने के बाद फिर से हमारा हम उसके राइट पे जाएंगे, वो हमारे पास नहीं होगा, फिर हम इसको प्रिंट करेंगे एंड 25 को प्रिंट करके हमारा जो स्टैक है अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम खाली हो जाएगा। हमारे स्टैक में अब कुछ भी नहीं होगा। तो टेम्प ऑफ राइट, टेम्प इज ऑल्सो नल and my stack is also empty, so that means मेरा जो ये वाला कंडीशन है वो अब ट्रू हो चुका है। ये भी ट्रू है, सॉरी दिस वन इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। हमारा टेम्प भी नल हो चुका है, हमारा स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है, तो मतलब ये पूरा कंडीशन ट्रू हो गया है एंड ये इसके लूप के बाहर आ जाएगा एंड हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है, जो कि है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द ट्री। I hope you enjoyed this video. Let me know in the comments down below how did you like it and share it with your friends as well if you think it was helpful. I'll be back with another video very soon. Till then, happy coding. Bye bye.